करते हैं? आप क्लास के नोट्स और वीडियोस आपके साथ शेयर होते हैं, आप खुद बैठ के पढ़ते हैं उसको क्लास के बाद? यस मैम। वेरी गुड। और बेटा अब वीडियो दोबारा देख सकते हैं, आप उसको पॉज करके नोट्स ले सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसी भाषा है जो हमको और आपको सुनने को नहीं मिलती हमारे आसपास। तो हम अगर एफर्ट नहीं डालेंगे, हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आएगी, है ना? और हमें इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए अगर हमें एडमिशन चाहिए, है ना? हमें अच्छी जगह एडमिशन चाहिए, हमारे इंटरव्यू में हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, हमें अपने आंसर्स लिखने के लिए इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। सो इंग्लिश इज अ वेरी पावरफुल टूल, आपके भविष्य के लिए एक बहुत ही ताकतवर और इम्पोर्टेंट ये एक टूल है, एक माध्यम है। लेकिन वो तभी होगा अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे, क्योंकि हमारे आसपास तो कोई इंग्लिश में बोलता नहीं है ना? तो हमें सुनने को नहीं मिलती, हमें पढ़ने को नहीं मिलती, हमें स्पेशली बैठ के इस भाषा को सीखना पड़ेगा। एंड एनी लैंग्वेज हैज 4 एस्पेक्ट्स। देयर इज रीडिंग, तो रीडिंग बहुत जरूरी है, चाहे आप अपने चैप्टर्स ही पढ़िए, बट रीड देम, ओके? read them aloud and read them silently in your mind. Then there is listening. जब आप वीडियो दोबारा देखेंगे, you will listen to your teacher explaining. Listening is very important, क्योंकि किसी भी भाषा में एक इंसान बोलता है और दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है और पहला सुनता है। तो listening is a very important part of language development. अगर एक ही बोलता रहेगा, दूसरा को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में जब होती है तो एक बोलता है दूसरा सुनता है, और जब एक बोलता है दूसरा सुनता है ना? तो दैट इज कम्युनिकेशन। सो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना? इसीलिए जब आप देखते हो कि जो मैं आपके साथ रिसोर्स शेयर करती हूँ उसमें मैं प्रोनाउंसिएशन भी शेयर करती हूँ। I also share the pronunciation of words. I share the meaning of words. मैंने आपको एक बार थिजोरस का पूरा दिखाया था कि आप वहां से कैसे pronunciation words का निकाल सकते हैं। क्लास में भी मैं कई बार उसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या बहुत बारीकी से उसको बोला जाना है, तो I share the pronunciation also with you. वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, उसको यूज करना चाहिए। सबको सब कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो यूज द इंटरनेट टू योर एडवांटेज। जो चीजें फ्री में आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको इस्तेमाल करिए एंड डेवलप योर लैंग्वेज, राइट? स्ट्रेंथन योर लैंग्वेज स्किल्स। ऑलराइट बेटा, चलो लेट्स बिगिन। Today we are going to Unit 2, Chapter 2, Indian Weavers. कौन बताएगा मुझे who is a weaver? ये हैं वीवर्स। वीविंग मशीन से भी होती है, बट वीविंग हाथ से भी होती है। वीवर्स आर पीपल हु दिस इज वीविंग, राइट? ये देखो, ये देखो, राइट? So these people are weavers. साड़ी, दुपट्टे, सूट, बेड शीट्स, बेसिकली कोई भी कपड़ा वीव किया जा सकता है।
So it is a lot of hard work, right? Okay. So the poem is about Indian weavers. Okay. Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. Right? Craftsmen होते हैं, artisans होते हैं जो हाथ का काम करते हैं. Right? मशीन से तो हो ही जाता है, बट मशीन से सब एक जैसा होता है. आर्टिसंस क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस वर्क्स ऑफ आर्ट. वो जो हर एक चीज अपने हाथ से बनाते हैं, तो कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती. राइट? एवरीथिंग इज यूनिक. एवरीथिंग दे क्रिएट इज यूनिक एंड स्पेशल. कौन कौन से आर्टिसंस होते हैं? गोल्ड स्मिथ होता है जो सुनार, जो सोने के आभूषण बनाता है, मूर्तियां बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती है जो गोल्डस्मिथ हाथ से बनाता है. कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं, वो भी हाथ से काम करते हैं ना. टेबल बनाना, बेड बनाना, चेयर बनाना, सोफा बनाना. कारपेंटर्स आल्सो वर्क विद देयर हैंड्स. वो टूल्स यूज करते हैं, बट दे वर्क विद देयर हैंड्स. राइट? कारपेंटर होता है बढ़ई. I'll just show you carpenter. This is carpentry. लकड़ी से ये भी हाथ की सफाई का काम है. राइट? People working with tools but with their hands. Right? The next profession is potter. Potter जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. एक एक बर्तन वो अपने हाथ से बना रहे हैं. राइट? So they look different. It's the same shape, but every pot is different, unique, special. So these are potters. Right? Okay. Next profession क्या है? Next profession is blacksmith. लुहार, जो लोहे का काम करते हैं. Right? This is a blacksmith. जो हाथ से औजार बनाते हैं. लुहार. Right? So this is what a blacksmith does. Weaver मैं आपको दिखा चुकी हूँ. कॉबलर भी हाथ से काम करते हैं. कॉबलर होते हैं मोची. कॉबलर. राइट? आपने देखा होगा इस तरह का उनके पास स्टैंड होता है, उस पे जूता लगा के उल्टा उसमें कील ठोकना, उसको चिपकाना, उसको रिपेयर करना. दिस इज व्हाट अ कॉबलर डज. कॉबलर को शू मेकर भी बोलते हैं. राइट? ये देखो वो हाथ में लेके जूता ठीक कर रहे हैं. कई बार हमारे जूतों में से वो फट जाते हैं या साइड से खुल जाते हैं, तो द कॉबलर स्टिचेस इट फॉर अस और विल फाइंड अ वे टू मेंड इट फॉर अस. ये देखो वो धागा लेकर सिल रहे हैं. दिख रहा है आपको? ये जूता खुल गया है तो इसको वो सिल रहे हैं धागे से, उसको ठीक कर रहे हैं. राइट? सो दिस इज व्हाट अ कॉबलर डज. ये देखो इनके सारे औजार, ये ब्रश हैं, ये और चीजें हैं, ऐसे ये. सो दीज आर सम प्रोफेशंस जो हाथ के काम है.
Okay. Now seasons and occasions when we need woolen clothes. We need woolen clothes during winters, right? Casual clothes. Casual clothes जब हम घर में आराम कर रहे होते हैं. और when do we use casual clothes? Summer season में. Summer season, okay. But casual clothes. समर में तो आप फॉर्मल भी पहन सकते हो. अगर समर में किसी का बर्थडे है तो आप एक फॉर्मल कुर्ता पजामा पहनोगे या शर्ट पैंट पहनोगे, राइट? सो कैजुअल इज कंफर्टेबल क्लोथिंग, राइट? फॉर्मल इज जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं या स्कूल फंक्शन में या घर के फंक्शन में, तो आप थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहनते हैं. टाई पहनेंगे या एक फॉर्मल कुर्ता पजामा पहनेंगे या बंद गला पहनेंगे, तो वो फॉर्मल हो जाता है. अदरवाइज आप डेली यूज में कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं. रिच सिल्क क्लोथ्स कब पहनते हैं? ड्यूरिंग वेडिंग्स, फंक्शंस, बर्थडेज, सेलिब्रेशंस, राइट? Yes, ma'am. उसमें हमारे महंगे महंगे, बिकॉज सिल्क इज एक्सपेंसिव. It says rich silk clothes. That means expensive clothes you wear during formal occasions. ये तो कैजुअल हो गया डेली यूज के लिए. स्पेशल ओकेजन्स के लिए फॉर्मल हो गया. कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स आप डेली यूज में पहनते हो, राइट? ओके. अच्छा, इसमें एक, दिस इज फन. One who weaves is a weaver. One who sings is a Singer. singer. One who teaches is a Teacher. Teacher, teacher. One who plays a game is a player, Gamer. gamer. Okay. Online gamer हम कहते हैं. Okay. One who dances is a, dancer, one who cooks is a, chef, chef, किसी ने कुकर नहीं बोला? नहीं मैम. क्योंकि कुकर ये होता है. एक मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी. वो कह रही थी कि मेरा बेटा कहता है, प्रियंका गांधी कह रही थी, उसका बेटा जब छोटा था वो कहता था, मॉम आई वांट टू बी अ कुकर. बच्चों को नहीं पता होता कि कुकर ये होता है जो खाना बनाता है, उसको कुक कहते हैं, कुकर नहीं कहते, राइट? ओके. एंड वन हु स्टिचेस क्लोथ्स इज अ Tailor. टेलर, नॉट स्टिचर, राइट? ओके. Now we have often seen the picture of Gandhi ji spinning on his चरखा. हमने देखा है ना, वो खादी पहनते थे, वो खुद अपना खादी वीव करते थे और वही पहनते थे. What is the reason behind this? क्यों करते थे वो? क्योंकि वो वीवर्स को recognition, he wanted weavers to get recognition and respect, right? Okay. Some of the tools used by weavers हमने देखा. एक तो जो लकड़ी का वो था उसको कहते हैं loom. What is it called? It's called a loom. And there is also the charkha. This is loom. ये जो है, right? इस पे वीविंग की जाती है. Then there is the चरखा. गांधी जी चरखा पे बैठते थे ऐसे, राइट? ये देखो, ये लेडी भी चरखा पे बैठी है. So what else? There is also the shuttle. Weaver shuttle.
This is called the weaver shuttle. ये जो इससे weaving shuttle, इससे ये weave करते हैं, right? This is called the shuttle. Okay. ये कुछ, these are some of the tools that are used by weavers. Now yarn, अलग अलग तरह के धागे. One is linen. Linen is your khadi. Then there is cotton. And then there is silk. Very good. बनारसी सिल्क. आज भी वहां पे बनारस में वो आर्टिसंस जो हैं वो हाथ से वीविंग करते हैं, राइट? सो लिनन बहुत यूज होता है, खादी, कॉटन यूज होता है, और सिल्क. ऑल राइट. सरोजिनी नायडू को हम जानते हैं, हमने उनकी बहुत पोम्स पढ़ी हैं. आज हम वीवर्स पढ़ेंगे. Okay. All right. So this is about, what is it about? Decoding the threads of time, color, and human life. So it is not just about weaving. It is about time. It is about color and life. The weaver of words. Sarojini Naidu was a weaver of words. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब मिला था. She was an activist during the freedom struggle. गांधी जी के साथ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और वो कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट वुमन गवर्नर भी थी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, राइट? उन्होंने ये कविता लिखी है. ओके. The poem at a glance. Let's read the poem and then we'll glance. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a haken wild, we weave the robes of a newborn child. तो कहते हैं कि आप सुबह सुबह, so early in the morning, आप बैठ के you start weaving, और आप इतना सुंदर आप weave करते हैं. You weave such beautiful bright clothes. Blue as the wing of a haken wild. So this is the bird she's talking about. कहते आप जो weave कर रहे हैं वो इस bird की तरह bright and blue है. See how blue and pretty this bird is, right? Okay. We weave the robes of a newborn child. ऐसे bright blue, बहुत सुंदर आप एक newborn child के कपड़े बना रहे हैं. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? कहते हैं आप सुबह सुबह उठ के वीव करने लग जाते हो, आप रात तक भी वीव कर रहे हो. Why do you weave a garment so bright? आप इतने bright garments क्यों बनाते हो? कितने bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. Plume of a peacock. What is plume of a peacock? I'll just show you. So this is plume of a peacock. ये जो पंख खोल के, so he says the clothes that you're weaving, the fabric that you're weaving is as bright as the plumes of a peacock, like this, so bright and beautiful, right? So you see how she's giving imagery of birds and animals, right? She says, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. The veils of, so for the queen, a bright veil is being weaved, right? यहाँ पे newborn child के लिए weave हो रहा था, यहाँ पे queen के लिए they're weaving a veil. Weavers weaving solemn and still,
Why do you weave in the moonlight chill? White as a feather, white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. She says, अब रात हो गई है, there is moonlight, और आप अभी भी, you're still weaving. And what are you weaving at night? White as a feather, white as a cloud. So, आप for a dead man's जो पार्थिव शरीर होता है उस पे सफेद चादर चढ़ाते हैं ना, कहते हैं अब आप वो सफेद चादर चढ़ा रहे हो. So what does she mean? Newborn child. So the weavers weave. जब बच्चा घर में आता है, खुशी का माहौल होता है, उसके लिए भी वीवर्स के पास, उसके लिए भी कपड़े बनाते हैं. जब जिंदगी में when there are important milestones in life, जब खुशी के मौके आते हैं, सेलिब्रेशन के मौके आते हैं, उसके लिए भी वीवर्स वीव करते हैं. और जब यहाँ से जाने का समय हो जाता है, अंतिम यात्रा, मौत के समय, उसके लिए भी ये वीवर्स, they weave a shroud. Shroud is a cloth in which a dead person is wrapped. I'll just show you just for the visual. Okay. Shroud. ये देखो. So when a person dies, ऐसे in a white sheet, that person is wrapped, right? So this is called a shroud, right? Okay. Now let's look at the okay. The poem at a glance. A conversational loom. So the poet is talking to the loom. वो loom से बात कर रही है. पहले से पूछ रही है, why do you weave a garment so gay? कैसे? अब इतना खुशी के मौके का गारमेंट आप क्यों बना रहे हो? And the loom says, we weave the robes of a newborn child. कि हम newborn बच्चे के लिए robes बना रहे हैं. Why do you weave a garment so bright? अब ये जो bright वाला garment है, इसको किसके लिए आप weave कर रहे हो? And the loom replies, we weave the marriage veils of a queen. हम शादी के लिए, for marriage and celebration and important functions, we are weaving these bright garments. The third question she asks is, why do you weave in the midnight chill? कि रात को ठंडा मौसम है, अंधेरा है, मूनलाइट है, चांद निकला हुआ है, why are you still weaving? And the loom says, we weave a dead man's funeral shroud. That means from birth to death, we weave for you. Okay. So dawn and birth. When the day starts, it also indicates the birth of a child, the birth of a day, दिन की शुरुआत, and the birth of a newborn child, right? Break of day is early morning, newborn child is beginning of life, right? Hopes, expectations, new beginnings. ये bird मैं आपको दिखा चुकी हूँ. Garment is robes for newborn child. तो दिन की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत, beginning of life and beginning of day. Then comes dusk and youth, when you've grown up and the sun is setting, right? Evening में the weavers are still weaving, और उसमें they're weaving a bright garment. And what is it for? It is for marriage veils of a queen. That means
celebration of growing up, of an important milestone in life. Happy, vibrant, cheerful, bright. Celebration. और उसके बाद then there is old age. तो night को equate किया है death से. Right? So night is deep and cold. And what is the garment they're weaving? A dead man's funeral shroud. Color क्या है? White. पहले the two things were bright and colorful. Now what is the mood? The mood is sad, still, serious, and finality. सब कुछ खत्म. The day is over. Life is over. Finished. Night and death have been equated. यहाँ पे dawn and birth are equated. दिन की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत, end of the day and end of life. So that is what this poem. It is about the stages of life. जब day शुरू होता है, break of day, this is about infancy. When a baby is born, the mood is cheerful. जब घर में एक बेबी आता है तो बहुत ही खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल होता है. उसके लिए गारमेंट्स वीव किए जाते हैं which are bright blue. Then when the night starts, this is the celebration of adulthood, and the mood is energetic and romantic, and the garment being woven is for a wedding, right? And the color is peacock purple and green. And the third stanza talks about moonlight chill. रात हो चुकी है and the moon is out and the weather is slightly cold. रात में थोड़ी ठंडी हवा चलती है जो. So there is moonlight chill. So the stage of life is old age and death. तो old age और death में क्या mood होता है? Serious and still, right? And the garment being woven is the dead man's shroud. If there is death, they need a white cloth to cover the body, and that cloth is being woven by the weavers. और color क्या है उसका? Color है white. Okay. So basically what they're trying to say is, in the poem is that चाहे beginning of life हो या end of life हो, the weavers are always weaving for us, right? So from birth, then during important celebrations, then to goodbye time, the weavers are continuously weaving for our needs. Now the colors, जो colors इसमें mentioned है, birth के time में blue color is mentioned. Blue is the color of water, open sky, vastness and potential for new life. Second paragraph में she talks about purple and green. Purple is for royalty, green is for richness, and this shows they are symbolic of adulthood. And then white is for peace and purity and transition into the spiritual realm. So when a person leaves their human body and goes into the spiritual realm, right? So white stands for lifelessness, for coldness, for peace, and for purity. So this is the color symbolism in the poem. ये figures of speech हैं जो इसमें थी. White as a feather, like the plumes, right? Blue as a wing. और यहाँ पे alliteration है. Alliteration is when the first alphabet is repeated. Weavers, weaving, wing. Falcon, wild,
peacock cloud, right? This is alliteration. Now rhythm is day, gay, rhyming, wild, child, rhyming. So couplet, every 2 lines are rhyming. अगर आप देखेंगे poem में, day, gay, rhyming, wild child, rhyming, तो ये हो जाएगा A, B, night bright, rhyming, C, green queen, rhyming, D, still chill, rhyming, and cloud shroud, rhyming. So every 2 lines are rhyming. तो इनको कहते हैं couplet. Okay, when 2 lines follow a rhyme scheme, these are called couplets. तो ये rhyme scheme है poem की, A, B, C, D, E, F, right? Okay, these are the new words in the poem. I showed you the halcyon kingfisher. Plumes, I showed you the मोर के पंख, right? I showed you the shroud. Shroud is a cloth जिसमें dead body is wrapped, and solemn means serious. Okay. All right. So this is the message of the poem, that human life goes on in a cycle, and for every stage, weavers have clothes for us. Weavers weave clothes for the beginning of our life. Weavers weave clothes for our vibrant peaks. जो भी हमारे peaks, जो भी हमारे important milestones होते हैं, उसके लिए भी वो हमारे लिए weave करते हैं. और जब end आता है हमारा, उसके लिए भी वो they weave clothes for us, right? This is for you when you revise. Let's take a look at the questions in the text. Okay, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. ये भी हाथ का काम है, knitting, embroidery, tailoring, weaving. You can talk about these. You can also discuss the various products that the weavers have made. हमने अभी discuss किया है, right? The weavers make children's clothes. They make special clothes for special occasions, and they also weave cloth for the last final journey, right? Shrouds. वो यहाँ पे ये table हम we have already discussed. If you see, ये जो है right? This is something we have already discussed. So early morning, the weavers weave robes for newborn. Late in the evening, at night, they weave clothes for evening. Late in the evening, for special occasions like weddings and cold night, moonlit. In the moonlight, they weave clothes for the final journey, the shroud, right? कलर्स का भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कलर्स है, किस कलर का क्या फीलिंग है. This also we have discussed. This, right? So every color, what does it represent? ये यहाँ पे आपको, you will get this response. Okay. Now 2 words to describe the weavers in the last stanza and state their importance. So in the last stanza, what is the solemn and still? Solemn is serious and still is when somebody dies, they're still, right? They don't move.
So the two words are solemn and still. Solemn is serious. जब किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सीरियस होके वो माहौल हो जाता है, right? So and still, because the person who has died is no longer moving, right? So very serious and still, उस तरह का माहौल हो जाता है, right? Okay. This we've discussed. Now rhyming words in the poem. We've discussed already. Let's take a look again. Day, gay, wild, child, night, bright, green, queen, still, chill, cloud, shroud. These are the list of rhyming words. Okay. Antonyms and synonyms. Antonym is opposite, anti. Synonym is same. So word, opposite, sentence, same meaning, sentence. So इससे you can make write new. Opposite is old. Make a sentence with old. Synonym is fresh. Right? Synonym is fresh. So make a sentence with fresh. Okay, bright. Opposite is dull. Bright, opposite is dull. Antonym is dull. The room is bright. Synonym is shining. The stars are shining. Dead, opposite is alive. The plant is dead. Lifeless, without life. The bird looked lifeless. Still, opposite of still is moving. The water is still. Synonym is quiet. Please keep quiet. Wild, jungly. Opposite is tame, paltu. The wild tiger lives in the forest. And synonym is fierce, khatarnak. जंगली का मतलब जो जंगली कहते हैं ना बहुत जंगली है, ये बच्चा बहुत जंगली है, इसका मतलब not well behaved, right? So synonym is fierce, khatarnak. The lion is fierce. Fall. Opposite of fall is fall, rise. Rises may fall. Opposite is drop. There was a drop in temperature. Child. Child का opposite हो जाएगा adult. Right? The child is playing and synonym of child will be kid. The kid is smiling. Baby तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो child का synonym will be kid. Right? So figures and speech, this we have discussed. जब हम poem को discuss कर रहे थे, हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये फिगर्स ऑफ स्पीच. इसमें आपके सारे आंसर्स हैं. सिमिली कौन सी है पोम में, मेटाफर कौन से हैं, और एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ साउंड कौन से है. राइट, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. ओके, राइम स्कीम भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसका राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोम. अप्रिसिएशन हमने पहले भी किया था, फिर अप्रिसिएशन करते हैं इसका, बिकॉज आपके एग्जाम में यू माइट गेट, तो दिस नीड्स टू बी अ 3 पैराग्राफ अप्रिसिएशन विद मोर डिटेल्स. ठीक है, दिस इज जस्ट बेसिक. द poem Indian Weavers is written by Sarojini Naidu. It describes the 3 stages of life: birth, marriage and death through the work of weavers. यहाँ पे आप थोड़ा सा तीनों stages के बारे में you will write in a little more detail, and then say the language is simple and musical. The poet uses beautiful images, similes and symbolism, and the poem gives a meaningful message about the cycle of life. Right?
These are 4 lines on the importance of clothes. ये poem लिखी है. Clothes protect us from heat, cold and rain. They keep us clean and comfortable. Different clothes are worn on different occasions. We should respect handloom and traditional clothes. Okay, this is importance of clothes. Write an appeal to use handloom products in our daily life. या आप एक अपील लिख सकते हैं why we should all wear khadi. We should encourage our handloom industry and our handloom workers. You can also visit a handloom factory and write a report, right? आप कंपेयरिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. आपके स्कूल में एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हो रहा है उसके बारे में. And then you can read other poems of Sarojini Naidu. This is it. Now let's look at the new vocabulary from this poem. अपने जो आप अपील लिखेंगे उसमें आप एक स्लोगन भी लिख सकते हैं. Choose handloom, support Indian weavers. You can talk about its benefits and encourage them, right? You can go to a handloom factory and write about it. Let's look at the new words in this poem. Okay. We have already discussed the colors, the cycle of life, the revision of each. एक बार ये जो colors से compare किया है ना poet ने, let's take a look. So when clothes of a newborn baby are being, the robes are being woven. So what is the color? The color is of this bird, this blue, right? So this is the color of the newborn baby's robe. Okay. Then when dusk comes and the baby has grown up, it is time for celebration, weddings. So the color of the marriage veil is like the plumes of a peacock, purple and green. So see how the color also changes with each stage of life, right? See, purple and green. Very unique. Actually, it's a lot of colors, not just purple and green, but that's what she's mentioned. Yeah, if you look at this peacock, perhaps this is purple and green, right? So this is what she has described in her poem. So this is the kind of cloth that the weavers are weaving for the wedding. So blue and purple are colors of celebration, green and purple, right? Okay. And then finally, at the end of life is, he equates night and death. And the color is white. White as a feather, white as a cloud. And what is this white? It is a shroud. The cloth that is used to cover a dead body. So this is the color that she's talking about, right? Color of a cloud, color of a feather. But actually, what is it? It's a shroud. Right? This is a shroud. Right? This is a shroud, right? And the body after death is completely wrapped from all sides in a white cloth.
That's called a shroud. Okay. All right. So we come to the end of this class. We have completed this poem, Indian Weavers. After the class, beta, I'm going to share this resource with you, which has answers to your icebreaker questions, and then there is summary of the poem, and then there is questions at the end of your text. ये जो आपके टेक्स्ट के एंड ये जो आइस ब्रेकर क्वेश्चंस है इनके आपको आंसर मिलेंगे, एंड देन क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ योर पोम, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, इसके आंसर्स भी आपको यू विल गेट देम हियर. ओके, एंड also at the end of the class you will get another resource, that is this, which will help you. जिससे हम पढ़े हैं इसमें पूरे पोम का रिवीजन है. दिस इज फॉर योर रिवीजन. ठीक है, दिस इज अबाउट सरोजनी नायडू, दिस इज अबाउट द पोम. इस पोम में क्या पोएट क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे? लूम से, और लूम जवाब दे रहा है. राइट, 3 stages of life, thrice the loom answers. Right, और वो 3 stages क्या हैं? This is covered in each slide, and then this is the revision. किस time of the day stands for what stage of life, और उस stage of life में कैसा mood है वीवर का, क्या कपड़ा बनाया जा रहा है, and what is the color symbol in the stanza. Right, इससे आपका पूरा पोम रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, पर ये लिख के जरूर प्रैक्टिस करना बेटा. दिस इज अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ एंड टाइम. इसके लिए एक देयर इज one cloth being weaved for a newborn child, one for important occasions, and finally one for to see off the person who is no more. Color coded, why, what does each color stand for in the poem, the figures of speech in the poem, the rhyming scheme, and the words, important words. ठीक है, तो ये भी आपके साथ शेयर क्लास के बाद में कर दूंगी बेटा. इसको भी आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं. जब आप करें तो ये आप चेकलिस्ट जरूर यूज करें. Can I map the 3 times of the day to the 3 stages? Can I explain the 3 color symbols? Do I know the rhyme scheme? Can I identify and explain 2 figures of speech and the meaning of Haken and Shroud? Make sure you are able to do all of this after your written practice. All right, beta. I'll see you in the next class. Bye. Any question? Bye, ma'am. Thank you. Any question? No, no question, ma'am. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. सब समझ में आया. चलो, very good. अच्छे तरीके I से. hope you're going to practice. है ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक. कल करूँगा मैम प्रैक्टिस. Good boy. ठीक है बेटा. Hmm. Okay.